Now it's slightly information based, that I'll give you some data on the available content uh, of the method and material, how traditionally in Bengal Patachitra the colors were extracted, what had been the old sources, and it is purely for our information. Many of the painters are still continuing with some of this colors which are extracted from leaves, flowers, local stones, etc. And it gave it a very different look. And right now they are using commercial paints for their convenience. It's also providing them with a better longevity. So there's nothing like what we can call as the right or wrong, but we are trying to focus on the ancient practices and the current condition. So this is just a part of it. And at the end of this information that is collected from Bengal Patachitra, I am also going to show you quite a few video clips from Madhubani that was shot, and this is just my personal opinion that viewing all those working process will give you some better understanding, because it's not always can be described through words, and the paintings, they have their own charm. So just by watching some people into the process of their creation can make the understanding more deeper. So I'm just explaining the purpose of showing those videos. So right now we are concentrating on the local color making that is common for all this region, Bihar, Jharkhand, Bengal and Odisha. There are commonalities. So I try to compile it from the sources that I found in Bengal. And before that I talked about the methods that they follow in Odisha. They are slightly different, but the sources are more or less the same. So let's see that. In Bengal Patachitra, Patua village at Nayagram, Pengla, Paschim Mednapur district, the Patuas derive their colors from nature in multiple ways till now. The list below gives a description of the process for extracting colors. Black soot. Previously, the source of black soot was from oil lamps, cooking fire, burnt rice grains, or burning bamboo. Now, a more modern method is from scraping the soot out of dirty lorry exhaust pipes with a stick. The soot is collected in a plastic bag, decant into a coconut shell, worked over with the finger to compress the powder in the coconut shell. Then a capful of gum is added to the compressed soot to make a watery paste. The gum is brought from market and it is produced from the bale fruit. The black color is ready to use immediately. Red, sagoon or teak. The new leaves of sagoon tree are selected and plucked. The leaves are crushed and the color is squeezed out in the coconut shell. The color is left to dry in the sun before adding natural glue from bale fruit. The color becomes darker each time it is kept to dry in the sun. So it develops slowly. Red jaffran or the saffron. The seeds of saffron are used to extract color. The seeds grow in spiky pods which grow in clusters at the top of the tree. The seeds are removed from the dry fruit pods. The seeds are rubbed by the hand and the color is collected in a dry coconut shell. The color is dried in the sun and then natural glue is added to it.
blue or aparajita. That's from the source of aparajita flower. That's a blue colored flower. The blue flower, whose name means lady who cannot be defeated, aparajita, grows prolifically as a creeper, and the petals are plucked to make those colors. The flower is sometimes rubbed directly onto the paper to transfer the blue color directly, or the petals are crushed in a coconut shell and then a capful of gum is added to make a paste that works as a binder. So, white kusum mati or the kusum mati is a special type of clay, and only the whiter stones are used to in order to produce the white color. White stones are collected and then rubbed onto a plain surface, forming a white paste. Then the white paste is collected, put in a pot and left to dry. A small amount of gum is added to the paste. This gum is used to ensure that the paint stays on the scrolls. Red, pan or betel leaf, chun lime, khair, kathyo. These are mostly brought from the market to make a red color. The ingredients are crushed together and the color is extracted. The color is collected in a coconut shell and left to dry in sun. Natural gum is added thereafter. Green, kundri. The leaves of kundri are used to make the green paint. The leaves are collected and crushed by the pestle. The color is squeezed out and collected in a coconut shell. The color is dried in the sun and then natural glue is added to it. Green is also extracted from the leaves of seam or flat beans, berenda or keshut, bottle green. The yellow paint that the painters make from the source of turmeric, and which is like the plant of turmeric, which is a plant in the ginger family. Its roots are the source of a bright yellow spice and dye. The Patuas use this plant to produce a yellow color. In the next step, the turmeric is crushed into small pieces using a pestle stone. Then the small pieces are gathered and squeezed, and the yellow juice is poured into a coconut shell. This liquid is left to dry for a few days and then the gum is added. Different shades of yellow can be obtained using direct sunlight. To get a darker color, the pure juice is left more days in the sun, but if a bright color is needed, then the mixture has to be kept out of the sunlight. Now, the source for brown, which is teak or sagon, the mature leaves of sagon are collected, the stalks are removed, the leaves are crushed using a pestle, the color is extracted and collected in a coconut shell. It is dried in the sun before natural gum is added to it. Adding a cupful of gum, which is extracted from the bale again, which is the apple wood bale, to each crushed colors and mixed with the finger. The coconuts containing the color are then left in the sunlight to deepen the color. The amount of sun exposure equates to the darkness of the color. The Patuas mixed these natural shades in a coconut shell to achieve new shades. They use paint brushes available in the market now. The traditional handmade brushes are made from goat or squirrel hair. The hairs are aligned carefully around the wooden stick, and a cotton thread pulled from the fabric of an old sari is
wound around to bind the two together. The hair would be cut carefully from the scarf of a goat's neck. The goat needs to be at least 6 months to 1 year old. So, we gathered some information about how the paints were extracted from different natural sources in Bengal. It is not very dissimilar from the tradition of Madhubani, and the information, like if I be very precise, then as we know that apart from the floor and wall decoration that is part of their daily ritualistic practices, they also paint on paper. And for all cases, like unlike the rice paste that is known as pither, pither, and occasional red dots which are made out of vermilion or the regular used sindoor. The walls, both inner and outer spaces, are heavily painted in the village, as well as those things are there on paper. So, the mandapas during the, these are like the shrines, the sheds during some ceremonies like weddings and other auspicious ceremonies. The mandapas at the courtyard are colorfully painted. And there is a variety of color that they use. So, earlier the pigments derived from lampblack, lime, geru, that is the laterite dust, and other oxide and earth colors, local berries, flowers, twigs, branches, leaves, soils, burnt branches, etc., mixed with goat milk, cotton tipped flared straws, and also the bamboo stick that were used to fill the colors and as well as making the lines and the borders. Then acacia gum or the gum extracted from the local bubble tree was used as a fixative or a binder for the water soluble paints to give it some permanence. The painting done on paper are open to paints available in the market. They often apply multani mitti or china clay and cow dung tint to have a feel of the mud wall on the handmade papers. In fact, in the work of Channo Devi that we have seen earlier, there we have seen that the paper is already coated. They often use off-white colors because that gives them the sense of the wall. So, it is not painted with lime, but it is done on the uh, prepared wall most of the time. So, with a sequence of videos that is shot in the real condition in the village named Jitwarpur, we will see Geeta Devi and other painters from Jitwarpur village where mostly the Brahmin painters are located. So, I will show you quite a few video clips from 2003 just to show how it was done on the different surfaces traditionally, and also from the video let us just get a hang of the glimpses of the local life that is there. And it is very important when we talked about the context, the contextualization and decontextualization in our previous module. It is very important to see the thing in its existing context separately and also have some experience of viewing the same objects in the artificially lighted museum space. So, let us switch to the videos, take your time and watch them very carefully, and we will discuss those things in our following lectures.
चलो नहीं हो कथी चल चल नहीं दादी नीति हाँ सब मतलब कुछ संस्था से जुड़ कर अपन इंडिपेंडेंटली काज करें हाँ पहले से ना डायमंड्स हो गए डायमंड्स डायमंड्स पहले के हाँ पहले से नहीं ऑफिस टाइप सभा में बना रहे कार्यालय जो चले रहे सेवा फिर वापस मूर्ति फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट का रहना है इसको नाम इन्वेस्टमेंट संस्था बसंत मूर्ति फाउंडेशन बसंत स्कूल और बसंत कॉलेज हाई स्कूल बसंत वुमेन्स कॉलेज
स्टोर कीपर आर्टिस्ट कलाकारों से स्टोर कीपर समझ एक चीज छै कि एहिठाम अहाँ सब अपने कोनो संस्था नहि बनबै छियै एहिठाम मतलब कोनो अपन जे जितवारपुरके कोनो आदमी कोनो संस्था नहि बनबै छियै छै लेकिन अहाँ सब अपने किया नहि करते सब आदमी को मिलकर या दू चारि पाँच आदमी मिलकर एकटा जे बना लेबै तहन तऽ एतेक जे परेशानी नहीं है हमार तो घर मधुबनी है देव के छनि भाटी कांग्रेस अध्यक्ष जे छला IIT कानपुर में छथि प्रोफेसर IIT कानपुर में कहीं पर वो बनाओ रहल छै तऽ दोसर हिनका चूँकि टीवी पर एकरा देखेबा केना बनै छै की समस्या छै कतऽ कतऽ की प्रॉब्लम भऽ रहल छै ताहि दुआरे इम्हरका सब काज कऽ कैलू जे हैंडीक्राफ्ट के जे छै चरण ओकरो सबके इंटरव्यू लेल ओकरा तऽ क्वेश्चन किछु बनल छै जवाब देल छै से गप करै छै तकर बाद ई सब जेना फायर ब्रांड स्टेटमेंट नाम लऽ कऽ मानि लिअ अहाँ ऑफिस पदवी तऽ भऽ गेल अहाँ के घर पर हमारे करूँ यही घर में संचालित हो जाए वो तो मैंने सर में एकटा छलखिन ने जे ई जे मतलब काज करै छै वएह मतलब ओहो डॉक्यूमेंट ताहि दुआरे हुनका रहै छलनि बाहर जे कोई जाइ छै ने एहिठाम से जे कनिको प्रोमिनेंट आदमी अछि ओकर पहिल डिमांड होइ छै कि एकटा हमरा मिथिला पेंटिंग आब ओ ई चीज बुझौ या नहि बुझौ से नहि छै जतेक कतहु केओ आयत बाहरसँ जे नीक पद करी तऽ पहिल डिमांड इएह करबै कि लेकिन एकटा चीज हमरा नहि लगे कि जतेक अवार्ड आइ तक भेटलै या काज भेलै
ओहिमे मतलब जेंट्स में क्यों कहीं कि जे लेडीज के चूँकि एकर शुरुआत जे छै ने से लेडीज से शुरू भेटल छै जेंट्स के भेटल छै ओ अहाँके जीवन शांति पासवान जे छै हुनका जानते छै जीवन शांति पासवान उनका अवार्ड भेटल छै जॉइंट पति पत्नी छथिन ने अच्छा जॉइंट नेशनल लेकिन एहिमे ज्यादे हमरा लगैए प्रोमिनेंट लेडीजे छै शुरुआत मैंने अहाँके विपुल जे छलखिन आ हुनका खास कऽ कऽ महिलाके लेल बेसी छलनि कलाकार ओहि समयमे छलखिन तऽ इएहसभ काज केलक लेकिन ई भेलै कि स्पेलिंगके बेसी ओ अपन साहित्य बुझले ताहि दुआरे सोशलाइज करैमे बेसी अहाँके नहि भेल बढ़िआँ हमसभ अपन बनबै छी बेसी बिहारो सरकारवला जे छलै ओहो बन्द कऽ देलकै लालू प्रयास स्टेट अवार्ड स्टेट अवार्ड खत्म कर 10 साल ऊपर हो गई आब वो कह रहे हमसभ गलत बुझलहुँ तऽ कहते कि जे यादव को लाइए तब बात आ ई बात यादव खुदा एक दूसरा यादव सब 10 साल से ऊपर हो गई चाहिए अहू में कलाकारों संग जाती है हाँ कलाकार जरा बस डाल के यादव तो नहीं यादव का नाम नहीं दे कलाकार उससे से वापस कर देते थे या तो वो सब यादव की ये नहीं कलाकार यादव कलाकार व्यक्ति असल में वो एखनो तक जे छै ने अहाँके मेन अहाँके तीने टा कास्ट जे छै एखनो अहाँके ब्राह्मण नहीं आप तो वो शादियों में सिखलते हैं लेकिन अब एक दू गोटा ओ तऽ नगर नहीं छै एखन तक बेसी पासवान शुरू छै तीनटा ब्राह्मण कैस्ट और पास के साथ जमुना देवी चमार रोटी पास में विशाल हो एकर सबके पेंटिंग अहाँ सबके पेंटिंग में किछु अंतर रहै छै कि जेना कोन तरह के अंतर रहै छै दुनू एकर समाज बेसी पेंटिंग ऊपर खापर टाइप के भी टाइप के हरिजन अपन देवता छै अपन देवता के ऊपर में ज्यादा बनबै हम सब अपन देवता के बनेलहुँ हम सब अपन रामायण महाभारत तो की मतलब वो सब रामायण महाभारत ये नहीं अथी करे छे आप की बात है कलाकार छे जेना हम आब हरिजन पेंटिंग बना ओहो सब मिथिला पेंटिंग बना लिया पहले से सिखल के या देखल के या सिखल के या लेकिन मूल तो ओकर सबके छले वह जेना योजना पेंटिंग थी तो योजना पेंटिंग आके इनका अलग के इनका जर्मनी वो ये योजना के देखल के गाँव घर में महिला सबके सिखल छोड़ी लेकिन योजना जो इतिहास का राज्य में शूट करेंगे ठीक राज्य में तो बात कर लेते राज्य में नट जे योजना जो दै छै तकरा बजा कऽ
कागज दऽ कऽ ओकरा पूरा टाइम कहलखिन जे डिजाइन अहाँ हाथ पर बनबै छी से टोटल डिजाइन अहाँ एकर हमरा से बना दिअ। अब भऽ गेल ओहि दिनसँ ओकरा सरकारके भेलै जे नहि एकर ट्रेनिंग दिया देल जाय जोड़नाके। जोड़ना ओकरे एकाके मास्टर रखलकै, ओहीपर जोड़ना पेलकै तऽ प्रचार भऽ गेलै। तऽ ई पहिने थोड़े दिन बनाबऽ लागल हरि जाय जोड़ना पेल। अब है काज तो कहबे करें जो मिश्रित हमहूँ सा हमहूँ मतलब गोदना में भऽ गेल जे कि हाथ पर जे बनबै छलै तकरा फिर आब कागज पर बना कागज पर देखो ने कागज वो कहीं देखो देता ओकरा से फोटो करता है की डिफरेंस एक्चुअली दोनों में है। तो फंक्शन करे छे अपने स्ट्रांग नहीं रहा गाड़ी যাচ্ছে এক ঘন্টা পরে एक्सपो मेला 3 बजे अलग वाला देखो ना अरे चार चल से बुझबै 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 अच्छा इनमें कलर जो यूज करे छे सकलो मतलब नेचुरल कुछ बिना ई कलर चले छे ई भेले ई कलर भेले या पीला भेले तीन चार का कलर वाला या bravo गेल है रंग कोना देल जाइ छै तैयारी ठाम प्राप्त करै छै भीतर कनी देखो पेंटिंग के कतो वाट पर बनल है होगा तो कम छै चाहिए हां भगती वाला को उसी ने बोल है का देल छै कोनो जानवर छै नया स्टाइल के हाथी पक्षी छोट छोट बनै छै गोदना तऽ एक्चुअली हाथ पर बनै छलै तऽ एही सब चीज के बनै छलै इस बारे कियो तो कोनो फिगर कोनो चीज के बना देलक जानवर के या पक्षी के हां तो ओकरे खाली चित्रित केलकै ओहिमे तो कोनो देवी देवता के तो ऊपर बनै नहि छलै दे आई मुसलमान के जखन नहीं कोनो रहल हिंदू आके मुसलमान महिला के खास कऽ कऽ पुरुष के जे भोगी छलाह महिला सबके लेल ई भेलै जे हिंदू आके कोनो स्कूल नहि छै ओहिमे मार काट ई सब होइ लक्षण भेलै जे मने हिंदुओ मारि दै छलै अपना हिंदू बेटा के कोनो
तकरा बाद ई किछु के नहि हेबाक चाही अथी वला कॉल पर आबै आ इम्हरका महिला सब सोहागिन जे मरि जाइ छथि तऽ हुनका स्वर्गीय प्राप्त सुहागिन जे मिल जाए मतलब गोदना जिनका छनि अच्छा ओ हुनका स्वर्गीयता छनि ताहि दुआरे धार्मिक मान्यता सेहो एकटा फिल्म बनल छै लेकिन असली फिल्म वो औरंगजेब वाला जे छै औरंगजेब वाला जे फिल्म छलै ओहिमे हिन्दू मुस्लिमके कोनो फिल्म नहि छलै तऽ हिन्दूमे जे छलै माने हिन्दू महिलाके तखन ई भेलै जे नहि एकटा हिन्दूके जतेक महिला छलै से सब अपन गर्दन पर देह पर आब कहाँ आब नहीं बदली आब तऽ एकदम देखै छियै खत्म एकदम खत्म हो गई तो पहले देखिए पूरा गर्दन छाती गर्दन इतना गहना होती तेना बनल सब 8 पर सेहो बहुत जगह तऽ देखै छलै कि मतलब नाम सेहो लिखल रहै छलै आब ओहि दुआरे नामेटा मात्र बतबै छथि महिला सब जे ओहन शौकीन लोक सब से खाली नामेटा लिखबै छथि जे ओहो एकटा चिन्ह रहल छै नहि तऽ लेकिन एखनो गाम घरमे गोदनाके प्रचार छै खास कऽ हम देखलियै जे हरिजन वगैरह ई सबमे से छै अपने नहीं अपनो सब गाँव घर शहरमे खत्म भऽ गेलै उपलब्धो नहीं छै आ उपलब्धो छै तऽ सब नहीं तरहक छै गोदना गोदबै छै कि उसका ई गोदना और यंग जनरेशन को देखिए जो कि हम लुटे जा रहे हैं कुछ भी हासिल ये कलर होली
आठवां के नाम पर चश्मा हम दिन के नहीं लगबै छी, रात के कहियो मूड भेल काज करऽ के तहन चश्मा लगबै छी। चल कुछ रहा है आधे मिनट लगेगा। कुछ रहा है अब नहीं नहीं चाहिए खुशबू खातून हो गए हिंदू सब मुसलमान अब खुशबू खातून एकर नाम हो गई। श्री सिद्धकांत झा हमर नाम अछि, हमर घर जितवारपुर अछि और कहिया से पेंटिंग कर हम 20 वर्ष से ई पेंटिंग कर रहल छी, ई मिथिला पेंटिंग संजोग से और ई पहिने करै छलहुँ मिथिला पेंटिंग करै छलहुँ, तकर बादमे हमरा 10 वर्ष से हम ई तांत्रिक पेंटिंग करै छी। कि किनका से सीखे ई हम कृष्णानंद झा छथि, हमर गुरु भाई हेता, हरिनगर के छथि।